Thank you. Okay, so I hope the chapter Nelson Mandela is clear. I have tried to cover all the main value points from the chapter, tried to explain it. And now next is quick revision of the story, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. So story in brief, just a quick revision for you. So in the beginning, we see that how Lencho has his lonely house in the valley. It was situated on top of a low hill. And from there, one could see the river, the fields, and Lencho had a good crop. उसके जो खेत थे वो हरे भरे खेत थे, उसमें अच्छी फसल उग रही थी. So he was very hopeful. But one thing was needed and that was rain. उसको बारिश की जरूरत थी क्योंकि खेती बहुत अच्छी उग रही थी. And he just wanted a good rain at that moment, and this was what he was expecting. So Lencho, he saw the sky in the north. It had the clouds full of vapor-laden clouds, those were, and his wife was preparing the dinner. He told her that by God's wish it would rain, and soon big drops of rain began to fall. वो नॉर्थ की तरफ देखता है और उस तरफ उसकी नजर पड़ती है. वो देख सकता है कि बादल जो है वो आ रहे हैं, and he was hopeful that now it would rain, soon start raining, and they were going to have a good rainfall, good shower, which was definitely going to help them in their harvest. So that way he was hopeful, and he told his wife that it would soon rain, and it started to rain. Lencho, he went out to feel the rain on his body. He was extremely happy to see the rain fall, and he went out to feel it. He was very glad. He said that the drops of rain were like new coins, and he could see. Use of metaphor is there because the author is here comparing the raindrops with coins. It shows the confidence of Lencho that how he was going to have a good harvest now, because now he was having a good rainfall. So it would yield him good profit. अच्छी बारिश होगी तो अच्छी क्रॉप होगी, हार्वेस्ट अच्छा होगा, और उसकी वजह से उनकी जो कमाई है वो बहुत अच्छी होगी. सो दैट वे ही कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स टू द कॉइन्स. और वो क्या कहते हैं, द बिग ड्रॉप्स आर द 10 cents एंड द लिटिल वंस आर 5. उसको उन बारिश की बूंदों में कॉइन्स की झलक मिलती है. बट सून द हेल स्टार्टेड देयर. जो बारिश थी वो बदल गई हेल स्टॉर्म में. Strong wind began to blow and the rain started converted into the hailstone. जो बड़े बड़े जो बारिश की बूंदे थी अब वो उन ओलों की वृष्टि में बदल चुकी थी. जो हेल स्टोन्स थे वो गिरने लगे थे, एंड इससे उनकी फील्ड पर जो खेती जो थी वो फसल वो बर्बाद हो रही थी. The field became white as if covered with salt. The crop was totally destroyed. Lencho, he became sad. He felt that they would go hungry that year. Also, they would have no seed for the next crop. And he said that even a plague of locust would have left something for them. So, plague of locust. Plague क्या होती है? एक तरह का कैलामिटी, एक एपिडेमिक. एंड लोकस्ट क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं, जो स्वार्म, बड़े बड़े झुंड में जो इंसेक्ट्स आते हैं, टिड्डियां जो होती हैं, जो आकर खेती बर्बाद कर देती हैं. वो इतना दुखी था. ही फेल्ट सो सैड दैट ही सेड दैट कि शायद जो लोकस्ट होते हैं उनके बर्बादी के बाद भी खेतों में कुछ रह जाता है, बट इस हेलस्टोन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया. ये जो बारिश जो है जो हेल में कन्वर्ट हो गई, इसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया. इवन कि नेक्स्ट ईयर की खेती के लिए क्रॉप तक जो सीड भी नहीं बचा था नेक्स्ट ईयर के लिए. एंड लेंचो के पास सिर्फ एक उम्मीद थी और वो था हेल्प फ्रॉम गॉड. एंड ही वाज श्योर दैट नो वन डाइज इन हंगर. उनके वहां लोग ये मानते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता. एंड ही हैड अ ग्रेट बिलीफ इन गॉड. उसको ये एहसास था कि जो गॉड है वो सब कुछ देख रहे हैं और वो सब कुछ जानते हैं. जो इंसान के कॉन्शियंस में जो घट रहा है, जो उसके दिमाग में चल रहा है, भगवान को वो भी पता होता है. एंड दैट्स व्हाई विद फुल फेथ इन गॉड ही रोट अ लेटर टू गॉड. And he went to the post office. He wrote a letter there, and in the letter he asked God to send him 100 pesos. And he addressed the letter as God. When he dropped the letter, the postman, he went there, he took the letter and he started laughing, and he showed the letter to the postmaster. The postmaster also laughed on seeing the address because the letter was addressed to God. उस तरह का कोई पता ही कभी किसी ने नहीं देखा था, और भगवान को कौन चिट्ठी इस तरह से लिखता है.
But then he became serious. He was moved by the faith that the writer of the letter had shown in God. He wished to have such a faith in God. वो भी ऐसा faith अपने अंदर चाहता था. And he wanted to answer the letter. But reading it, he found that सिर्फ writing से बात नहीं बनेगी, because there was something else that was required, and वो था money. क्योंकि जो राइटर है लेटर का, उसको जवाब देने के लिए सिर्फ चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलेगा. उसने पैसे की मांग की थी, 100 pesos की मांग की थी. So he started collecting money from his friends, employees, his persons, acquaintances, जिनको वो जानता था. And वो ऐसा क्यों कर रहा था? Just to keep the faith of the writer. वो उस faith को तोड़ना नहीं चाहता था. And that's why he did not want to break that faith. He asked his friends, employees to contribute some money. He also gave us some part from his salary. उसने खुद भी contribute किया. So the postmaster finally was able to collect only 70 pesos this way and put the money in an envelope, and he addressed it to Lencho, and he wrote a single word on it, God as signature, because वो चाहता था कि लेंचो का ये भरोसा बना रहे कि उसको भगवान ने ही चिट्ठी लिखी है, भगवान ने उसकी चिट्ठी का जवाब दिया है. The following Sunday, Lencho came to the post office. He asked if there was any letter for him, and he was given that letter. Lencho did not show any surprise on seeing the money. सी कितना भरोसा, गहरा भरोसा था भगवान पर कि उसे पता था कि भगवान उसको पैसे भेजेंगे. तो पैसे को देखकर उसके चेहरे पर कोई सरप्राइज के हाव भाव नहीं थे, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है ऑन काउंटिंग द मनी, क्योंकि पैसे पूरे नहीं थे. एंड ही फेल्ट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड एनी मिस्टेक. उसको ये लगा कि भगवान तो गलती कर नहीं सकता है, और जरूर किसी ने पैसे चुरा लिए हैं. In no time, Rencho wrote another letter to God, and he puts it into the mailbox. The postmaster opened it. तो लेंचो ने दूसरी चिट्ठी लिखी, और पोस्टमास्टर ने भी तुरंत वो चिट्ठी कलेक्ट की, और उसने क्या पढ़ा? Lencho had written in that letter that he had received only 70 pesos, but he had asked for 100 pesos. He asked God to send him the rest, but the God should not send it through mail, because the post office employees were crook. See how the contrast is presented here. On one hand, Lencho shows deep faith in God, but he lacks the faith in humanity. वो लोगों पर भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको ये एहसास होना चाहिए था कि God can answer only through a medium, and the medium can be the post office employees. उसके दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आया कि ये पैसे कहाँ से आए. भगवान इस तरह से कभी जवाब तो देते नहीं है. उसने ये भी नहीं सोचा कि शायद किसी इंसान ने उसकी मदद की होगी. And that is the irony presented in the story. So we find how there is contrast between human and nature, and then human between humans. कि किस तरह से इंसान जो है नेचर के आगे भी बेबस है. वो बहुत उम्मीदें लगाता है, बट नेचर कब क्या रूप ले ले पता नहीं होता है. And this way we see that how hopes of Lencho are destroyed when the hailstorm destroys his harvest. And on the other part, we see there is a contrast that where on one hand, Lencho ने क्या दिखाया? भरोसा दिखाया किस पर? भगवान पर. लेकिन दूसरी तरफ he fails to show the faith in humanity in the people near him. So इस तरह से ये कहानी है एक wonderful story about the faith shown by a person whose name is Lencho. He writes a letter to God, and he complains about the employees that they were a bunch of crooks. In his innocence, वो उनको bunch of crooks बुला देता है कि वो लोग धोखेबाज हैं, वो लोग लोगों का फायदा उठाते हैं. And this is about the story. So I'm stopping here. Tomorrow I am going to ask questions from these chapters that we have discussed today. So come prepared. Random questions honge. I'll be asking you questions and you will answer the questions, and then we will have a doubt session. अगर आपके कोई doubts हैं तो वो भी हम cover करेंगे. We will also revise the poems, the 3 poems that are there. Okay.